Honorable Chief Justice of Pakistan, Honorable Judges of Supreme Court, Chief Justice of Lahore High Court, my brother judges, the President of the Islamabad, and also all the participants and judges. I will just take 5 minutes to explain the issue today is the civic rights and duties. Rights and duties are two sides of one coin. They are intertwined, and the issue between rights and duties is that in the Constitution of Pakistan, the three most heaviest and sacred words used in the Constitution in 3 articles. One, the Constitution starts from that the sovereignty of this universe belongs to Almighty Allah alone. Article 4 gives the rights and Article 5 gives the duties. राइट और ड्यूटी में फ़र्क क्या है? जब हम राइट की बात करते हैं और ड्यूटी की बात करते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 621 में हिजरत की थी तो उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना में 9 कुंबों के साथ बैठ के ड्यूटीज़ बनाई थी मोमिनों की. ड्यूटी होती है कि राइट आपका राइट उनकी ड्यूटी, स्टेट की ड्यूटी आपका राइट, स्टेट की का राइट आपकी ड्यूटी. राइट एंड ड्यूटी का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े हैवी अल्फाज से थे. जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 621 में जब ड्यूटीज दी तो अपने आखिरी खुतबा में राइट्स दिए ऑन हिज लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो मेरा जोर उन्हीं पे होगा अपने 5 मिनट के लिए. आर्टिकल 4 का वर्ड है इट्स द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू बी ट्रीटेड एज पर लॉ. इनएलिएनेबल का मतलब होता है जो चीज आपसे छीनने जाएगी और आपका बर्थ राइट है. और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ड्यूटी भी कास्ट की है आर्टिकल 5 में, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टू द स्टेट. एंड वहां पे वर्ड है इनवाइबल ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. लॉ का मतलब आइन में है आर्टिकल 70 में जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है फेडरल और प्रोविंशियल, और आर्टिकल 89 में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर लॉ बनाता है. तो फिर वर्ड है इन वायबल ऑब्लिगेशन, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू ओबे द लॉ. लॉ आर्टिकल 70 का भी, और साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो खूबसूरती है जो मैं आपको कहना चाहता हूं दैट इज आर्टिकल 189 that every judgment of the Supreme Court of Pakistan, if it enunciates the principles of law or decides the question of law, is binding on courts below and the executive authority. और आर्टिकल 201 में subject to the article 189, any judgment of a high court also binding on the courts below. So we will start. The issue was that हमें जो आज का वर्ड है कि सिविक राइट्स पे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया. दैट लॉ इज कॉल्ड नेशनल सिविल एजुकेशन एक्ट 2018. आवाम के लिए बनाया कि जी ह्यूमन राइट्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाया. आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से लेकर 25 तक हैं. अंडर सिविक राइट्स यू हैव राइट्स टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में मैं यहां बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफा आपको डिक्लेरेशन दी है. पहली डिक्लेरेशन थी 25 मार्च 2012 में वुडबर्न डिक्लेरेशन, जहां पे 7 चीफ जस्टिस ने वहां पे एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि दे विल गो फॉर द ग्रीन एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. दैट्स कॉल्ड वुडबर्न डिक्लेरेशन. सुप्रीम कोर्ट की साइट पे. दूसरी बंजारा साहब भी बैठे, गुलजार साहब बैठे, जस्टिस आजाद साहब बैठे, उन्होंने वाटर डिक्लेरेशन, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन 20 अक्टूबर 2012-18 को एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहते हैं, जो वाटर पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन के लिए, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक. देयर दे सैट डाउन एंड केम विद 20 प्रिंसिपल्स ऑन इस्लामाबाद डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सिटीजंस ऑफ देयर राइट्स टू वाटर, द ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर. तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशंस भी हैं. दोज आर दैट आर राइट्स टू लाइफ अंडर आर्टिकल 9 as enunciated by Supreme Court of Pakistan in Shalada case, as enunciated by various cases, right to protect the right of dignity under Article 14, right to home under Article 14 again, rights to property.
और किसी कानून में, किसी आइन में ये वर्ड यूज नहीं हुआ जो हमारे आइन में है. Every citizen has a right to hold, acquire and dispose of a property, and Article 24 states that no person shall be deprived of his property rights. और इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिविक राइट्स जो हैं, राइट्स टू अ लैंग्वेज, राइट्स टू अ कल्चर अंडर आर्टिकल 27 एंड राइट्स टू पब्लिक रिजॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट अंडर आर्टिकल 26, जिस पे बेशुमार पब्लिक पार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किए अपनी वेरियस जजमेंट्स में. सो दूसरी चीज टू दैट हमारे पास भी है दी civic rights का जो concept है, that is given in the constitution for driving article 4 and article 5, वही inalienable rights to be treated and unalienable right to deal with in the constitution. There is sum up with the certain judgment of the Supreme Court. Honorable Chief Justice of Pakistan recently has given 5-6 judgments which are reported in 2020 SCMR page 82 and 53, जहाँ पे ऑन पार्क्स पे है, फुटपाथ, प्लेग्राउंड, ऑन कंस्ट्रक्शन पे दैट्स कराची सर्कुलर रेलवे केस, अब्दुल करीम केस 2020 SCMR पेज 11. वहाँ पे the word used by Honorable Chief Justice is it has been observed inter earlier that government had to ensure that reasonably safe and good living was provided to the people of city with all amenities. इसी में there were various judgments on right to water, जिसमें जस्टिस बंजार साहब, जज हसन साहब थे, डॉक्टर रफुल्ला खान केस 2018 SCMR पेज 2001, जहाँ पे पहली दफा पानी की बात की थी, राइट टू वाटर. सो टू कंक्लूड माय स्पीच आई ओनली हैव 5 minutes. दैट सिविक राइट्स एंड ड्यूटीज इज दैट वी आर lucky to have the Article 189 and Article 201 in our Constitution, and because of that article, the judgments of the Supreme Court of Pakistan on issues of parks, on issues of civic communities, the issues on the nuisance, the issues on the right to air, rights to light, rights to breathe, all these judgments which are given by certain judgments from the Sindh High Court and also from the Supreme Court, जो हमारे jurisprudence में आती हैं, we are lucky to have them protect our civic rights. और जैसे बात है, I will not conclude to say that the issue today in the conference is that we all got together here to deal with the issue which links with our daily life. And civic rights are head rights. They are civil and political rights enshrined in our constitution. And all rights, at the end I say, are subject to law. And there is only one law. And there is one article in the constitution which is not subject to law. That is Article 14, right to dignity and self-respect. It doesn't have any subject to law. Thank you. Our pride